Good morning, students. Our today's topic is the female reproductive system, page 44 of your NCERT book. The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina, and the external genitalia located in the pelvic region. These parts of the system, along with a pair of mammary glands, are integrated structurally and functionally to support the processes of ovulation, fertilization, pregnancy, birth, and childcare. What is ovulation? The release of ova is known as ovulation. Fertilization. What is fertilization? The fusion of male and female gamete is known as fertilization. Ovaries are the primary female sex organs that produce the female gamete, that is ovum, and several steroid hormones, that is ovarian hormones. Ovarian hormones are estrogen and progesterone. The ovaries are located one on each side of the lower abdomen. Ovaries are present inside the abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligament. Ligament is a fibrous connective tissue. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. Stroma is a jelly-like cytoplasm. The stroma is divided into two zones, the peripheral cortex and the inner medulla. The oviduct is also known as the fallopian tube, uterus and vagina, constitute the female accessory ducts. तो फीमेल accessory ducts कौन कौन सी हैं? fallopian tube, uterus और vagina. ये तीनों constitute करती हैं female accessory ducts. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. Periphery means around surrounding से ovary से start होती है और uterus तक चलती है. The part closer to the ovary is the funnel-shaped infundibulum. Now, fallopian tube के कौन कौन से पार्ट्स हैं? जो सबसे नज़दीक में ओवरी के पार्ट है उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम. उसके बाद वाले पार्ट को बोलते हैं एम्पुला और लास्ट जो नियर यूट्रस है उस पार्ट को बोलते हैं इस्थमस. तो फेलोपियन ट्यूब को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस. सो जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं आगे इनफंडिबुलम. द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम possess finger-like projections called fimbriae, which help in the collection of the ovum after ovulation. The infundibulum leads to a wider part of the oviduct called ampulla. The last part of the oviduct is known as isthmus, has a narrow lumen. Lumen means बीच का पार्ट. द ट्यूब के जो बीच के पार्ट होल है, ओपनिंग है, उसको बोलते हैं ल्यूमन. एंड इट ज्वाइंस द यूट्रस. Next is the uterus. The uterus is single and is also known as womb. The shape of the uterus is like an inverted pear. Inverted means ulta. Pear, a type of fruit. नाशपाती जैसा fruit. It is supported by ligaments attached to the pelvic wall. The uterus opens into vagina through a narrow cervix. So the opening of the uterus is also known as cervix. The cavity of the cervix is called cervical canal, which along with vagina forms the birth canal. So cervix और vagina को canal को मिलाकर कहते हैं birth canal. The wall of the uterus has 3 layers of tissues. The external thin membranous is known as
पेरीमेट्रियम। जो यूट्रस की वॉल में 3 लेयर्स हैं, आउटर लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मिडल वाली को बोलते हैं मायोमेट्रियम और अंदर वाली को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। यूट्रस में 3 लेयर्स हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। बाहर की जो थिन मेम्ब्रेनस लेयर है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मिडल वाली थिक है और उसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। जो इनर वाली है उसमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। The endometrium undergoes cyclic changes during menstrual cycle while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby. Menstrual cycle के टाइम में एंडोमेट्रियम में बहुत सी चेंजेस आती हैं, वो शेड होती है। मायोमेट्रियम हेल्प करती है बेबी की डिलीवरी के टाइम में, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करती है ताकि जिससे कि बेबी पुश होकर बाहर आ सके। The female external genitalia includes mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris. Figure 3.3a. Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. Labia majora are fleshy folds of tissue which extend down from the mons pubis and surrounds the vagina opening. The labia minora are paired folds of tissue under the labia majora. The opening of the vagina is often covered partially by a membrane called hymen. The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the 2 labia minora above the urethral opening. The hymen is often torn during first coitus, that is intercourse. However, it can also be broken by a sudden fall or jolt, insertion of a vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. In some women, the hymen persists even after coitus. In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. Now, next topic is mammary glands. A functional mammary gland is characteristics of all female mammals. A mammary gland are paired structures that contain glandular tissue and a variable amount of fat. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing clusters of cells called alveoli. The cells of alveoli secrete milk, which is stored in the cavities of the alveoli. The alveoli opens into mammary tubules. The tubules of each lobe join to form a mammary duct. Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla, which is connected to lactiferous duct, through which milk is sucked out. हर एक मेमरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 मेमरी लोब हैं। उन लोब्स के अंदर एल्वियोली हैं, स्ट्रक्चर्स, सेल्स हैं जिनको कहते हैं एल्वियोली, जिनके अंदर में मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। वहाँ से वो एल्वियोली से मेमरी टिब्यूल्स के थ्रू एक डक्ट है जो बाहर आ रहा है मिल्क, और वो मेमरी टिब्यूल्स आपस में ज्वाइन करके मेमरी डक्ट बनाती हैं। उसके बाद वो बनाएंगी मेमरी एम्पुला और बाद में लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू मिल्क बाहर फीमेल की बॉडी से बाहर आएगा। तो पहले क्या है, मेमरी लोब, उस मेमरी लोब के अंदर एल्वियोली हैं। एल्वियोली के ल्यूमन्स में जो ब्लड वो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से वो मेमरी जो ईच एल्वियोली ओपन्स थ्रू द मेमरी टिब्यूल, मेमरी टिब्यूल्स आपस में ज्वाइन करके मेमरी डक्ट बनाती हैं और मेमरी डक्ट्स आपस में मिलकर मेमरी एम्पुला के थ्रू लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होती हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। थैंक यू।